हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट अस नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग योर टेस्ट 10 जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इजी पीजी फंडामेंटल टॉपिक दैट इज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। चलो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आपने कौन से क्वेश्चन हैं जो सही किए या गलत किए। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। What is the correct IUPAC name of the following compound? So let us check the compound. There is a benzene ring, there is a COH group, and there is a NC group. Isocyanide group, NC. It's not CN, it is NC. Now, out of these two, COH has more priority, so we'll name it as the derivative of benzoic acid, right? So it will be 1, 2, 3, 4. 4 isocyanobenzoic acid, right? Benzoic acid is benzene with COH, and on the fourth position, the first carbon is this only 1, 2, 3, 4. On the fourth carbon, we have isocyano, NC. So that is 4 isocyanobenzoic acid. Now the question is, you have a benzene ring with 3 substituents. We can see chlorine is there, nitro group is there, CH3 is there, methyl is there. So we are supposed to number the carbon atom of the benzene ring ताकि हमारे जो substituent है उन्हें lowest number मिल सके. तो let us now number. कहां से हमारी नंबरिंग होगी देखते हैं. So it will be 1, 2, 3, 4 and we'll write this substituent as per their alphabetic order. तो ये है क्लोरो, this is nitro, this is methyl. So we'll write 1 chloro, 4 methyl, 2 nitro, benzene. Substituents को उनके alphabetic order में लिखा जाता है. So the answer indeed, I'm sure you will get it as 1 chloro, 4 methyl, 2 nitro, benzene. Now the question is the IUPAC name for this. So you can see there are 2 CHO aldehyde groups are there. So this is one aldehyde group and there is another aldehyde group, right? So I'll number it 1, 2, 3, 4, 5. It is 2-methyl pentane diol. 2 aldehyde groups are there. Diol. Ul is the suffix we used for aldehyde, right? And they're the functional group. So we'll name it as 2-methyl pentane diol. Of course, CHO क्या है, एक terminal group होता है, right? Because CHO is the only functional group present in the molecule, तो वही terminal होगा, उससे parent chain start होगी. So आपको जरूरत नहीं है position mention करने की in this case. So of course the answer is 2-methyl pentane diol. Okay, now the next molecule here we have is, the question is we are supposed to write the IUPAC name of this molecule where we have a triple bond and there is a double bond. So हम numbering parent chain किस तरह से करेंगे. पहले तो सबसे लंबी वो chain कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं वही आपकी पेरेंट चेन होगी बच्चों. और नंबरिंग आपको इस तरह से करनी है ताकि वो जो डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है उनको लोअर नंबर मिले. सो आई नंबर इट एज 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 कार्बन की मेरी पेरेंट चेन है जिसमें 1 के बाद देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, 4, 5 के बीच में देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड देयर इज अ सबस्टिट्यूएंट एट थर्ड कार्बन मिथाइल. सो इट विल बी 3 मिथाइल 1, 2, 3, राइट? हेक्स 4n 1 ine, right? So this will be the name. First you'll write about double bond and then triple bond in the suffix. So the name of this molecule of course is C. So just keep in mind पहले आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जो आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उनकी जो पोजीशन है उसको लोएस्ट नंबर मिले. Okay, now we have another molecule. So this is the molecule जिसका IUPAC नेम पूछा गया है अगेन. तो आपको दिख रहा है इस मॉलिक्यूल में देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल. तो आपको इसी तरह से पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है ताकि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो part बन सके and numbering should be done so that your functional group should get the lowest number. So what it will be, 3-methyl butane 2-ol. So 4 कार्बन की पेरेंट चेन जिसके सेकेंड कार्बन पर OH जिसके लिए सफिक्स यूज होता है ol. It will be 3-methyl butane 2-ol guys. 3-methyl butane 2-ol or 2-butanol you can write. Okay, now the next is the structure of isobutyl group. So iso means ending with this chain. Iso means like this. This is, now it is isobutyl, so there has to be total 4 carbons and from here it is attached to the parent chain. So this is isobutyl. Ending with this we write iso, right? And there are total 4 carbons here, so we'll name it isobutyl. A is the correct answer.
Now the question is the systematic name for the following compound. What is the systematic name for this compound? So एक complicated सा molecule आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले parent chain select करो, सबसे लंबी carbon chain in the continuation. Let us select the parent chain first. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is the parent chain, guys. Yes. Is it the parent chain? Not 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbon parent chain. Right? Total 8 carbons in the parent chain. You can count. This is the longest chain. Now these will act as a substituent. Right? These will act as a substituent. Complex substituent. So what is the name of this complex substituent, guys, here? 1, this is the first carbon of the substituent which is attached to the parent chain. तो ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा. So it will be 1 bromo 2 chloroethyl. And similarly इस substituent का नाम होगा 1 chloro 2 bromo ethyl. Right? तो एक 1 bromo 2 chloro, एक दूसरा 2 bromo 1 chloroethyl है. Yep. Now of course numbering parent chain की आप करेंगे, किधर से भी कीजिए सेम नंबर आएंगे दोनों के, तो आपको उधर से नंबरिंग करनी है जहां से जिस सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली पहला जो ऑर्डर मिल रहा है उसको मिले आपका छोटा नंबर. राइट? तो नंबरिंग आप 1, 1, 2, 3, 4, 5 इधर से भी अगर करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 4, 5 पे ही पोजीशंस आ रही हैं, बट ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. राइट? इनका नाम अलग है. तो अगर नंबर सारे सब्स्टिट्यूएंट्स के वही आ रहे हैं 4, 5, 4, 5 ऑन बोथ साइड, तो आपको नंबरिंग वहां से करनी है ताकि जिस सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा नंबर मिल जाए. यस. अब आप कहोगे मैम ब्रोमो और क्लोरो ही तो है दोनों में. राइट? सो यू कैन सी 1 ब्रोमो इट इज 2 ब्रोमो, सो आई विल नंबर 1 ब्रोमो वाला को छोटा नंबर मिले, उधर से नंबरिंग करेंगे ताकि 1 ब्रोमो को छोटा नंबर मिले. सो इट विल बी 4 1 ब्रोमो 2 क्लोरोइथाइल 5 2 ब्रोमो 1 क्लोरोइथाइल ऑक्टेन. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान रखिएगा बिकॉज यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी भी जो चेन है उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी. एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि इधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से जो प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि नाम दोनों का ब्रोमो क्लोरोइथाइल है, तो 1 ब्रोमो है, ये 2 ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो वाले को प्रेफर करते हुए उधर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी. राइट? सो आई होप यू गेट इट राइट गाइस. Now the question is the IUPAC name of the following compound. तो इस कंपाउंड में आपको दिख रहे हैं दो फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड. तो आउट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा होता है प्रायोरिटी के हिसाब से मेन फंक्शनल ग्रुप, और CHO एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट. सो लेट अस फिगर आउट द पेरेंट चेन. तो हमारे जो पेरेंट चेन है बेटा स्टार्ट होगी इससे ही. दिस इज द पेरेंट चेन. राइट? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला इज द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन. सो दिस इज our parent chain. This is the parent chain. Right? So this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5 and this is 6. So on second carbon, on fifth carbon there are two substituents, that is second and fifth there are two substituent methyl. Right? And there is a double bond. Total number of carbon in the parent chain is 6, so hex is the word root for the parent chain. So for CHO, because carbon CHO का is a part of the parent chain, तो हम उसके लिए oxo word use करेंगे. So what will be the name of this compound, guys? 2,5 dimethyl 6 oxo. 6 carbon पे oxo है, CHO है, which is that carbon is also we are counting in the parent chain, so we'll write 6 oxo hex 3 in oic acid. There's a double bond 3 और 4 में. Got it, guys? So preference COH is the main फंक्शनल ग्रुप जिसके लिए एंड में हम ओइक एसिड रखेंगे, CHO को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे. ओके, नाउ वी हैव अनदर मॉलिक्यूल इन व्हिच आई कैन सी COCl. तो इसका IUPAC नेम बताना. COCl इज एसिड क्लोराइड, तो जिसके लिए सफिक्स यूज होता है ऑयल क्लोराइड. राइट? सो वी विल यूज द सफिक्स ऑयल क्लोराइड फॉर दिस. सो लेट अस क्विकली नेम दिस. 1, 2, 3, 4, 5. So 2 and 3 there is dimethyl. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. This is a 2,3 dimethyl pentane oil chloride. 5 carbon in the parent chain. So 2,3 dimethyl pentane oil chloride. Oil chloride is the suffix that we use for COCl. Got it, guys? D is the correct answer. Okay. Now the question is how many are correct IUPAC name. तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको हर एक मॉलिक्यूल को बना के देखने कि इनमें से कितने जो हैं वो करेक्ट IUPAC नेम है. राइट? सो each one of
these you are supposed to make and write. 2 ethyl 3 methyl butane. तो अगर मैं चेक करूं पहला वाला 2 ethyl 3 methyl butane, ब्यूटेन इज 4 कार्बन, जिसके सेकेंड कार्बन पर उनके हिसाब से देयर इज अ मिथाइल, एंड ऑन थर्ड कार्बन इथाइल, ऑन थर्ड कार्बन देयर इज इथाइल. सो इफ दिस इज द कंपाउंड, द पेरेंट चेन हमारी जो होगी, द लॉन्गेस्ट चेन वो ये होगी 1 2 3 4 5. तो इसका नाम ये नहीं हो सकता है, ब्यूटेन इज नॉट द पेरेंट चेन. अगर इस तरह का कंपाउंड है, पेंटेन इज द पेरेंट चेन, इट विल बी 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन. नंबरिंग इस तरह से स्टार्ट होगी. So this is wrong, right guys? Now 1 chlorocyclohexene, let's make the second one. 1 chlorocyclohexene, 1 chlorocyclohexene, ये भी गलत है बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट से पहले डबल बॉन्ड को नंबर छोटा दिया जाता है. तो आप यहाँ देख रहे हो सब्स्टिट्यूएंट को 1 क्लोरो, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट होनी चाहिए थी जहां पर डबल बॉन्ड है, राइट गाइस? सो इट हैज टू बी 3 chlorocyclohexene rather than this numbering. Numbering is wrong here. Now the next 1 ethyl 2 2 dimethyl cyclohexane. Again the numbering is wrong. Why it is wrong? Because numbering होनी चाहिए थी ये 1 और ये 2, ताकि दो substituents हैं, 2 मिथाइल लगे हैं, 2 substituent को छोटा नंबर, तो सेट आता 1 1 2 rather than 1 2 2. So again numbering is wrong. Yes. So मिथाइल वालों को फर्स्ट पोजीशन मिलनी चाहिए थी ताकि दो substituents को छोटा नंबर मिल पाता. Next, fourth one is 1 cyclohexyl methanoic acid. Methanoic acid is HCOOH, right? Cyclohexyl, 1 cyclohexyl methanoic acid. Is it the correct name for this? Methanoic acid. Yes, guys. 1 cyclohexyl methanoic acid is HCOOH. Is the correct name? HCOH is the methanoic acid. Of course not, guys. So अगर हम आपको दिखाते हैं, okay, this is cyclohexane carboxylic acid. It should be named like this, cyclohexane carboxylic acid. Similarly, next पे अगर आप जाएंगे तो जो नाम दिया गया है फिफ्थ ऑप्शन का 3 कार्बोक्सी, ओके, 3 कार्बोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, कार्बोक्सी नहीं, मतलब कार्बेल्डिहाइड. 3 कार्बोक्सी, कार्बोक्सी को एज अ सब्सटेंट माना है और एल्डिहाइड को एज अ पेरेंट फंक्शन ग्रुप माना है, विच इज रॉन्ग. कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है, वही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड या कीटोन दे विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट. सो दिस इज आल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट 1 ब्रोमोब्यूटेरीन. तो अगर आप ऐसे करोगे, अगेन नंबरिंग गलत है क्योंकि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट, सो दैट इज आल्सो रॉन्ग. नाउ द लास्ट वन इज 2 ऑक्सोब्यूटेनल. ब्यूटेनल बना लिए, 2 ऑक्सोब्यूटेनल. दिस इज करेक्ट. द ओनली करेक्ट IUPAC नेम जिससे करेक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज 7, राइट? 2 ऑक्सोब्यूटेनल एल्डिहाइड है, देयर इज अ कीटोन हियर. 2 ऑक्सोब्यूटेनल एल्डिहाइड विल गेट द प्रायोरिटी ओवर कीटोन. तो अल से एंडिंग होगी, प्रिंसिपल ग्रुप होगा, एंड योर कीटोन विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट. सो इंडीड जो 7th वाला है, दैट इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज. 1 is correct. Okay, now the number of benzylic hydrogen in 1 ethyl 4 methyl benzene. तो कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, किसमें पूछा गया है? ये रहा हमारा बेंजीन, और 1 ethyl, what is ethyl? CH2CH3, 1 2 3 4, 4 methyl. This is 1 2 3 4. How many benzylic hydrogen? बेंजीन के साथ, this is benzylic, बेंजीन के साथ वाले कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं, this is also. So we have total 5 benzylic hydrogen. बेंजीन रिंग के साथ वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, they are benzylic hydrogen. So we have total 5 benzylic hydrogen in this compound. Got it, guys? I hope that is correct. Okay. Now the question is the number of functional group present in the following compounds. कौन से functional group present है, चलो जल्दी से चेक करते हैं. Let us see. Okay, this is aldehyde group, CHO. This is amine, right? This is ketone. This is amide group. This is carboxylic acid group, and this is ester group. 1 2 3 4 5 6.
So we have aldehyde, we have amine, we have ketone, we have acidamide, we have carboxylic acid, and we have ester. Not ester, sorry, anhydride here. This is anhydride, right? COO, anhydride. Anhydride, carboxylic acid, acidamide, amine, ketone, and aldehyde here. Got it, guys? Yes, so the answer indeed is this. All these groups are present. Okay. Identify the number of carbon atoms in the parent chain of the following compound and the number of carbon atoms in the parent chain of the compound listed to give the final answer as integer. तो हर एक में आपको parent chain को कंसिडर करना है. तो आपको रिंग है और स्ट्रेट चेन है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगी, that will be your parent chain. और अगर दोनों में equal है, the ring will act as a parent chain. So let's figure out. So we have 1, 2, 3, 4 carbon here and 6 carbon here. So ring is my parent chain. In first case, ring is parent chain which has 6 carbon. In second case, 1, 2, 3, 4, 4 carbon in the straight chain and 3 carbons in the ring. So the longer chain is the 4 carbon chain, that is your parent chain. So 1, 2, 3, 4, 4. So parent chain is again ring, both have same number of carbon. So here also 1, 2, 3, 4. 4 is here, so 4. Ring is the parent chain. Now we have 2 cyclobutyls. So parent chain is this, 3 carbon, straight chain is the parent chain on which cyclobutyls are. And here also this is named as this. So this is the parent chain on which 3 cyclohexyl are added. So just count it, guys. The total number of carbon in the parent chain. Yes, so it is 6 plus 4, 10 plus 4, 14, 18, 18 plus 4, 22. So we have total 22 carbon atoms. If we add the carbon atoms of parent chain in each of these, that is 22, guys. So the answer indeed is 22. So be careful कि parent chain कौन से select हो, straight chain होगी कि ring होगा, that you are supposed to know to solve this question correctly, guys. Right? Okay. Now the question is total number of correct combinations. So you are supposed to check the correct combinations here. Yes? Correct combinations here. Prefix is given and the functional group is given. So when the prefix is given and functional group is given, which is written as the correct prefix? They are asking the correct prefix. Yes? Okay, guys. Okay. So functional group is this and prefix is this. CONH2. The prefix used here is carbamoyl. Perfect. CHO prefix used is oxoiaformyl. Yes. Done. That is also incorrect. And nitroso is there, azo is there, chlorocarbonyl is there, alkoxycarbonyl is there. So you are just supposed to know which are correct and which are wrong prefix. तो इसके लिए बेटा आपको आई होप आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड्स को जब फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है, तो कौन कौन से करेक्ट हैं, राइट, विच ऑल आर करेक्ट. यप्स. ओके, सो लेट्स चेक गाइस. Carbamoyl, perfect. This is for this oxo. This is N-methylamino. So this is wrong. This is nitroso, not nitro. Right? This is azo. Chlorocarbonyl. And this is alkoxycarbonyl. So how many are correct out of these? 1, 2, 3, 4. 4 are correct. So a bit I can say a difficult question if you don't know कि कौन से functional group के लिए क्या प्रीफिक्स यूज होगा इफ इट इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, गलत हो जाए, बट दैट इज द करेक्ट आंसर. यस, सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि ये जो टेस्ट है इसमें आपकी केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आए होंगे, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द वेरी फंडामेंटल चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज जीओसी. और जीओसी में भी जो बेसिक चीज है IUPAC नॉमेनक्लेचर उस पे बेस्ड था. सो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग टेस्ट गाइस.